Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel. A student in physics, we have completed two chapters, electricity and magnetic effect of electric current. Today we are going to start a new chapter, that is light. First we will discuss about the reflection of light. Okay, this chapter is most important for the point of view of your board examination also. The student this year only, CBSE reduced some portion of this chapter. Okay, so we will not discuss those topics in this lecture. So we will cover so many topics of this chapter further, but today we will discuss the reflection of light and image formation in plane mirror. First discuss what is light. Student, आप जानते हैं what is light? Light is a form of energy. First तो ये जान लीजिए, light is a form of energy. Is it clear? It is one thing, student, one thing which needed always to see anything around us. एक चीज है जिसकी जरूरत पड़ती है, चीज हमारे आसपास, हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं, to see the object, to see those objects, we needed a things, that is a light. Without light, we cannot see any object around us. आंखें तो हैं, ठीक है, लेकिन without help of light, we cannot see the object. So it is most important. तो देखिए, first chapter में the most important is without light we cannot see any object. Okay, we needed the help of light. Student, हम चीजों को देखते कैसे हैं? How we can see any object around us? देखते हैं example. First तो देखिए source of light. What is the source of light around us? You can see. You can tell me there are so many sources of light. इस रूम पे भी लगी, जैसे बल्ब है स्टूडेंट, ठीक है, बल्ब आर द सोर्स ऑफ लाइट्स एंड द मेजर सोर्स ऑफ लाइट इन द अर्थ, दैट इज व्हाट? सन. ओके, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट इन द अर्थ. So let's suppose this is the source of light. मैंने यहाँ पे सन लिया, ठीक है, it is the source of light and there is a human. यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, let's suppose उसकी ये कोई आई है, आंख से यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो इसकी आई है, ठीक है. He can see the sun. How the person will observe, how the person will see that sun. इस सन को, वो इस सूर्य को कैसे देख सकता है, ठीक है. देखिए कैसे, there are so many rays are emitting from this source, ठीक है, इस सन से बहुत सारी रेज एमिट हो रही है, and one ray will directly fall in the eye of the human is here. Okay, so one ray is falling on his eye. तो ये जो एक रे है, ये इसकी आई पे सीधे स्ट्राइक कर रही है, इसकी वजह से वो इस चीज को देख सकता है. सेम इट मे बी अगर यहाँ पे कोई बल्ब लगा हो, ग्लोइंग बल्ब, ओके, सो ग्लोइंग बल्ब भी क्या है, बहुत सारी रेज एमिट करेगा और एक कोई रे इसकी आई पर आएगी, that ray will help to see this bulb. Okay. सेकेंड, ये तो हुई बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज हमने सन लिया, बल्ब लिया, या कोई भी ऐसी चीजें जो लाइट कैंडल है, ठीक है, जलती हुई कैंडल, ठीक, बर्निंग कैंडल. सो दीज आर एमिटिंग द लाइट, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस विच आर नॉट एमिटिंग द लाइट. फॉर एग्जाम्पल, कोई चेयर हो सकती है, ठीक है, यहां पर पड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो लाइट एमिट नहीं कर रहा है, ठीक है,
how we can see this object, because it is not emitting the light. So how we can see that object? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, लेट्स सपोज दिस इज अ चेयर, यहाँ पे कोई एक चेयर है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स क्या कर रहा है, लाइट एमिट नहीं करता. सो हाउ दिस आई विल सी दिस बॉक्स? इट इज वेरी सिंपल. कोई भी चीज को देखने के लिए किसी भी लाइट सोर्स की जरूरत होती है, बिकॉज it is not emitting the light. So let's suppose there is a sun, and sun emitting the light, the ray will come like this. Okay, after striking in this box, ray will reflect and this person can see. Now देखिए, अभी इस ऑब्जेक्ट के पास कोई लाइट सोर्स नहीं है, ये लाइट एमिट नहीं कर रहा है, बट सन इज एमिटिंग लाइट. ठीक है, ये अपनी लाइट एमिट कर रहा है. यहां से आपकी रेज ऐसे आएगी, इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इन दिस बॉक्स इट विल रिफ्लेक्ट एंड दिस पर्सन कैन सी दैट ऑब्जेक्ट. ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस. Either we can say there are two type of object. First, the object which are emitting the light, and second type of object which are non-emitting the light. First type of object which are emitting the light known as luminous object. Luminous object, या इसको कह सकते हैं luminous source. ठीक है, luminous object. Those object which have their own light, जिनके पास अपनी खुद की लाइट है और वो emit करते हैं. Is it clear? Like sun, bulb, burning candle, these all are. Second type of source or second type of object are which have not their own light, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है. ठीक है, they are not emitting, they cannot emit the light. These objects are called non-luminous object. Is it clear, student? So object, there are two type of object, there are two type of source of light. First is luminous object and second is non-luminous object. समझ में आ गया, luminous and non-luminous. Is it clear? Okay. Now reflection. देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, यहां पर भी आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन. एक रे कोई इस पर स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक होने के बाद ये रे अपना पाथ चेंज कर देती है, एंड दिस सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. इन क्लास 8, स्टूडेंट इन क्लास 8 we also studied, we have also studied this topic, reflection of light. या जब रिकॉल करिए, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पढ़े थे, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं. लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर. ठीक है, प्लेन मिरर में पीछे की साइड, ये बैक साइड ऑफ द मिरर है, द बैक साइड ऑफ द मिरर एज ए कोटेड, ये कोटेड रहती, एंड दिस कोटिंग इज मेड ऑफ बाय व्हाट, सिल्वर. ठीक है, जो सिल्वर होता है स्टूडेंट, सिल्वर की कोटिंग रहती है, बिकॉज सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. ओके, तो लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर को हम एक सीधी लाइन से दिखाते हैं. ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑब्लिक साइन इस तरह से मैंने किए दूसरे साइड. इट मींस इट इज कोटिंग. ओके, दिस इज द कोटिंग, ये कोटेड है. नाउ इफ यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक, इस सोर्स से अगर इस पर कोई भी लाइट रे इस तरह आती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, द लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. इट विल ऑलवेज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन. लाइट कभी भी आपका इस तरह से नहीं चल सकती. ठीक है, लाइट रे को जब भी आप शो करेंगे, दैट इज ओनली स्ट्रेट लाइन, ऐसे नहीं हो सकती. It is clear? Now, so this is the light ray. और आपको एक चीज और पता है स्टूडेंट, लाइट का जो नेचर है
इट शोज अ डुअल नेचर। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइट शोज डुअल नेचर। ओके, एंड इट इज, पहला जो नेचर लाइट का है, इफ यू वांट टू स्टडी द नेचर ऑफ द लाइट, सो it is also show the property like a wave and like a particle, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को शो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी लाइट चलती है, आपका प्रोपोगेट होती है। और पार्टिकल थ्योरी भी पार्टिकल थ्योरी भी लाइट को स्टडी करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। पार्टिकल थ्योरी यानी फोटोन्स वाले, ये आप जाके 11th में you will when you will go in 11th class, then you will study in deep this topic. Okay, अभी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो लाइट शोज डुअल नेचर। ओके, दो टाइप का नेचर शो करती है, वेव एंड पार्टिकल। सो यहाँ पे देखिए कोई भी सोर्स है लाइट का, एंड इंसिडेंट रेज कमिंग, दिस रेज कमिंग and striking here, what will happen? Obviously this, after striking this one, this will send back, either it will reflect, क्या कहेंगे इसको, या कह सकते हैं it will reflect like this, ये रे आपके इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम कोई एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये एक नॉर्मल है, दिस इज normal. This ray which coming from the source is known as incident ray. Incident ray. And after striking in this mirror, if it will send back this, अब ये जो रे का जो पाथ है स्टूडेंट, ये पाथ आपका चेंज हो गया। ठीक है, अभी भी स्ट्रेट लाइन है बट पाथ आपका चेंज हो गया, इसी को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये चेंज इन पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू एनी ऑब्स्टेकल, आइदर वी कैन से द सेंडिंग बैक द रे, ठीक है, बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये जो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे आती है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ओके, एंड दिस वन इज नॉर्मल। इफ we will check the angle between the normal and incident ray, this is denoted by I, and the angle between the reflected ray and normal, it is denoted by R. This is known as angle of incident and angle of reflection. ठीक, now अब देखिए this point, let's suppose I am indicating by it O. This is known as point of incidence. याद रखिएगा, इसको बोलते हैं point of incidence. Now law of reflection, देखिए laws of reflection. There are two laws of reflection. First is, इस डायग्राम की हेल्प से हमें रटने की जरूरत नहीं, ठीक है, इस डायग्राम की हेल्प से we can learn the law of reflection. कैसे, देखिए, first law of reflection, the incident ray, normal and reflected ray, the incident ray, normal and refracted ray are lies in the same plane at the point of incidence. याद रखिए, point of incidence पर, यानी इस पॉइंट पर तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, आर लाई इन द सेम प्लेन। आपको दिख रहा है एक ही प्लेन में है, ये ब्लैक बोर्ड है स्टूडेंट, ठीक है, ये एक प्लेन है। these three things, these all things are lying in a same plane, एक ही प्लेन में है। these all things are incident ray, normal, refracted at the point of incidence, these all lie in the same plane। पहला नियम याद हो गया, ठीक है। now second law, the angle of incidence, ये वाला एंगल between the normal and incident ray,
Okay, the angle of reflection, angle of incidence has always equal to angle of reflection. बहुत आसान है, ठीक है। पहला लॉ था आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, all are lie in the same plane. Is it clear? Second law, it is also very simple, student. Angle of incidence always equal to angle of reflection. These are two laws of reflection. Law of reflection student एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।